What is this? Has it started? Hi friends, welcome in today's live session. Today we are going to learn jumbled paragraph, जो कि हमें एनडीए ने आईबीपीएस की जो पीओ पीएसओ एग्जाम है और जो एसबीआई के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है और बाकी के जो एग्जाम्स है एमपीएससी यूपीएससी और बहुत सारे एग्जाम्स है उनमें से बहुत सारे एग्जाम्स में जम्बल्ड पैराग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाता है. So this is one of the most important questions which is asked in many exams in the portion of English. So we are going to study this. Now let's have an introduction to this topic. This type of question is based on communication compositional skills. Compositional skills means the skill of composing the units of language, such as there are various units of language such as sentence, paragraph, passage, or article, and many other smaller and larger units of the language. And this skill of composing all those units of language is known as compositional skill. That's why we call essay writing a composition, okay, speech writing a part of composition. Okay, so a paragraph is also a part of composition. We'll have to learn in detail what a paragraph is. See, the next point is that there are six sentences in this paragraph, which out of which two are the first and the last sentence is given, and the middle four sentences are jumbled and they are labeled as PQRS, and you will have to just rearrange them in order to form a proper sequence. See, everything in the language is a system. System, as you know, and if you don't know, I will tell you what is a system. System is a group of things which perform a task interdependently in a way. They are all the elements in a system are interdependent. As we have computer is a system. All the parts, all the elements of a computer are interdependent, and if we remove even one of them, one of those elements, components of the computer system, that system will not be called a system. Our body is a system in which we have very different organs. If you don't have a leg, you will be called a limb. Okay, you will be you if you don't if you are not you aren't able to speak, you will be called dumb. Means the system of your body is not complete. So in a system, every element or every component must have its proper position and must be in a working condition. So sentence is also a system in which even a single word is changed or moved from its place, or even a single word is not used correctly in that context, then that sentence cannot be called a sentence. That group of words cannot be called a sentence, because that is not a complete system. In the same way, you cannot use in a statement or in an assertive sentence. We use a subject in the beginning and then the verb follows, and usually the auxiliary verb follows, then the main verb follows. And you cannot use a verb in the beginning in an assertive sentence or a statement. That is the position, a fixed position of every word in a sentence. That's why the sentence is known as a system. In the same way, paragraph is also a system. Always remember this point. In a paragraph, every sentence has a logical position, and that logical position can be determined using a few techniques which I am going to discuss with you. That's why I always say that tips and techniques can help us find the link between sentences, and we can rearrange the sentences in a proper sequence. And remember the point that much practice is required in order to master this topic. And if you practice, this is very interesting if you understand if you understand the topic clearly. And if you don't understand, if you neglect even a single point, you will feel that it is a difficult part of grammar. It is a difficult part of English portion of the English language in competitive examinations. So always be focused, understand every point. The points are very few in number, and if you understand them clearly, you will be able to uh, get
get interest in this type of questions. Okay. And last point in introduction is you must have a sound knowledge of some basic topics of grammar. For example, you must have a sound knowledge of articles, how to use a, and the, where to use a, and where to use an. You must also have a sound knowledge about pronouns, preposition, pronouns, where to use pronouns. Pronouns are the words which replace nouns. Okay, and the noun comes first, and the pronoun follows. Then in the next sentence, this basic thing you must be familiar with. If you are not familiar with these basic things, you may face problems in understanding this topic. So I recommend you to revise this topic again. I will after completion of this live session, I will upload it on this YouTube channel and on my website also, which is shatakshitutorials.com. Visit that website also. And at the end of this, in the description of this video, at the end of this live session, I will add a link to the PDF in which you will get more examples for practice. I will give you more than 20 examples for practice at the in the description. I will give you the link to that PDF file. You can easily click on that link. You will be diverted to my website, and there you will be getting that. You will be able to download that PDF. Okay. So always keep in mind that if you don't have a sound knowledge of pronouns and articles and conjunctions, you must revise those topics and again come back to the session. Then you will understand the things. Many of our students already understand the things, even though I am revising all these basic things for the sake of the students who are new, for the sake of the students who are new to the Defense Career Academy, who are new to me. Okay, now let's learn the format of question which is asked in various competitive examinations. As you know that, as I have already told you that there are 6 sentences in a paragraph which are given in question. And as you can see in the second line, S1 and S6, these are the 2 sentences. First sentence and the last sentence of the paragraph are labeled as S1 and S6. S1 means paragraph का पहला sentence, जिस सेंटेंस से वो पैराग्राफ की शुरुआत होती है, उस पैराग्राफ में क्या पॉइंट मेंशन किया गया है वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना जरूरी है. यू मस्ट कीप इन माइंड व्हाट पॉइंट इज मेंशनड इन दैट फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ एंड हाउ दैट पैराग्राफ एंड्स. यू विल कम टू नो इन द सेंटेंस व्हिच इज लेबल्ड एज S6. जिस सेंटेंस को S6 लेबल दिया गया है, उस सेंटेंस से आपको समझेगा कि उस पैराग्राफ का एंड जो है वो किस पॉइंट से हो रहा है. शुरू में जो पॉइंट दिया है और लास्ट में जो पॉइंट दिया है, उन दोनों पॉइंट्स के भीतर जो 4 पॉइंट्स है या 4 सेंटेंसेस है, उनको जंबल किया गया है, आगे पीछे किया जाता है और उनको लेबल किया जाता है P, Q, R and S. As you can see in the line on your screen, on line number 4. P, Q, R, S. These are the 4 sentences which are actually jumbled and then labeled as PQRS, and they are you will have to rearrange them in to form a proper sequence to fit between S1 and S6. ये जो 2 सेंटेंस है S1 and S6, इन दोनों के बीच में जो 4 सेंटेंस है उनको जंबल करके लेबल किया गया है और उनको आपको प्रॉपर सीक्वेंस फॉर्म करना है. तो आपको 4 प्रोबेबल सीक्वेंसेस दिए जाएंगे ऑप्शन में आप, और उनको लेबल किया जाएगा A, B, C and D. ऑप्शन ए में एक सीक्वेंस दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल SQRP is a sequence in option A. In option B, QRSP is another sequence. In option C, QSRP is sequence, and in option D, SRQP is a sequence. And you will have to decide which of them is forms the proper sequence to fit better in between these 2 sentences S1 and S6. So let's go to the further point. Now I will talk to you about some tips which can help us in understanding or answering this type of questions. This type of questions are very simple, and you can easily answer them and understand how to answer them using these tips. The first tip is articles. You know that there are 3 articles in English: a, an, and the. A is used before a singular countable noun. An is also used before a singular countable noun. But the difference is that A is used before that singular countable noun which begins with a consonant. And if a singular countable noun begins with a vowel, we use an. Okay. For example, see, there are 2 kinds of nouns. Okay.
countable and uncountable. Sugar is uncountable noun. We cannot say one sugar, two sugars, three sugars. Okay. Water is uncountable noun. We cannot say one water, two waters, three waters. That's why these are uncountable nouns, and with them we don't use a and. We book is a countable noun. We can say one, two, three books. Okay. That's why countable noun के पहले a and का यूज होता है. हमें मालूम है. जिनको मालूम नहीं उनके लिए मैं बता रहा हूँ फिर से. और जो काउंटेबल नाउन, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लूरल काउंटेबल नाउन हियर. जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एन से वॉवेल से शुरू होता है उसके पहले एन यूज करते हैं. जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके पहले हम ए यूज करते हैं. और द हम तभी यूज करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट अ डेफिनेट थिंग वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल द. Okay, then by the use of this definite article you will come to know where that position of the sentence can be. Now, if you look at this example, you will find that there are six sentences. S1 and S6 are the first and last sentences. In this topic, in this paragraph, we are talking about Einstein and the Queen of Belgium. Einstein को एक दिन Einstein was a very simple man. Einstein was very simple in his way of life and indifferent to his astounding fame. वो बहुत ही सिंपल इंसान था और उसको एक दिन क्या हुआ, बेल्जियम की क्वीन ने ब्रुसेल्स को ब्रुसेल्स में उसका एक उसको इनविटेशन दिया है. तो देन you will find that two things are highlighted here in red color in sentence R and in sentence S. In sentence R, I have highlighted the definite article the. The officials means which officials are we talking about? We are not talking about any officials in general. हम किसी भी ऑफिशियल्स के बारे में बात नहीं कर रहे इस सेंटेंस में. इस सेंटेंस में हम किसी पर्टिकुलर ऑफिशियल्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर अधिकारियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिन अधिकारियों को क्वीन ऑफ बेल्जियम ने आइंस्टाइन को स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से रिसीव करने के लिए भेजा था. जब उन्होंने इन्विटेशन दिया था, आइंस्टाइन का आने का समय हुआ था, तब जिन अधिकारियों को उन्होंने भेज दिया था स्टेशन पे, उन अधिकारियों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका रेफरेंस ऑलरेडी S6 में आया है. तो हमें इससे समझ में आता है कि S6 विल कम बिफोर S विल कम बिफोर R इन द सीक्वेंस. मींस R एंड S, ये जो दो सेंटेंसेस है, इन दो सेंटेंसेस में से S वाला जो सेंटेंस है जिसमें मेनी गॉर्जियसली ड्रेस्ड ऑफिशियल्स, ये जो नाउन फ्रेज का मेंशन हुआ है, जिनके बारे में हम दूसरे सेंटेंस में R, ये जो सेंटेंस है उसमें डेफिनेट आर्टिकल यूज करके हम पर्टिकुलराइज डेफिनेट बना रहे हैं उसे. We are talking about particular officials which are already mentioned in S. That S, the sentence S will come before the sentence R. So in this way, articles can help us determine which sentence will come before which sentence. Means it will help us determine the sequence of sentences or find the link between any two sentences. A and can also be, see, A and are used to generalize things. कोई भी चीज को generalize जब हम करते हैं, means when we not talk about a particular thing, when we talk about a thing in general, we use A and. For example, a child must obey his parents. Means a child means, are we talking about a particular child? No, we are not talking about a particular child. A child means any child. So any child must obey his parents. Means here we are generalizing, not particularizing. We are not making it definite. Okay, we are not talking about a particular person. We are talking about any child in general. So generalize हम कब करते हैं? Usually we generalize in the beginning. Okay, and particularize afterwards. जब भी हम किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना शुरू करते हैं तब हम जनरल आइडिया बताते हैं पहले. वी जनरलाइज अ थिंग, देन वी पर्टिकुलराइज दैट थिंग, अ जनरल थिंग. ओके, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ जनरल आइडिया एंड पर्टिकुलर आइडिया. The sentence, I will give you two sentences. In the first sentence there will be a general idea, a general noun which you don't know about that thing, and in the second sentence you will be I will be talking making that definite. Okay, the first sentence is, yesterday my car struck a tree. कल जो है मेरी कार ने एक पेड़ को टकरा गई. किसी पेड़ को टकरा गई मीन्स क्या, डू यू नो which that tree was? Means you don't know which tree I am talking about. That's why I used a tree. I did not say the tree because you don't know which tree I am talking about. I am not talking about a particular tree.
means you don't know which tree, the listener doesn't know. That's why it is general. But in the second sentence, I can, as I have already mentioned that tree in the first sentence, it can be particularized in the second sentence, and we can use the definite article the. Then I can say you can still see the marks on the tree. अभी भी उस पेड़ पे आपको वो marks मिलेंगे. Okay. So in this way, articles can help us find a link between two sentences and come to the final answer. Now the next point is pronoun. Pronoun is another tip which can help us find link between sentences. You all know that pronoun is a word which replaces a noun. Pronoun ऐसा word है जो noun को replace करता है. इसका मतलब ये होता है कि noun पहले आएगा, pronoun वाला sentence बाद में आएगा. ओके. तब अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपको 3 सेंटेंसेस दिखेंगे जिनमें मैंने प्रोनाउन को हाईलाइट किया है. तीनों में भी एक ही प्रोनाउन है, एंड दैट इज ही. नाउ you will have to internally organize them again, finding a different link, finding a different uh, point in all the 3 sentences. But we understand that those sentences will obviously come after the pronoun or the noun that they refer, the pronoun refers. Pasture, you all know about pasteurization of milk and many other things. Here the process of pasteurization is talked about, and we are talking about the professor of chemistry Pasteur. He was the professor of chemistry at Stanford, and the pronoun he is used to replace that noun. Obviously, s will not come in the beginning. Okay, in because in s there is no means after careful and extensive study. After is generally used in the means after a few sentences, when a little bit process is discussed, then we use the word after. Such words also will help you in finding link between sentences. So pronoun के बारे में आपको एक ही बात याद रखना है, जो भी प्रोनाउन यहाँ वहां पे यूज किया है, फॉर एग्जाम्पल दे यूज किया है, तो आपको वो नाउन ढूंढना है जिस नाउन को वो प्रोनाउन रेफर कर रहा है या फिर जिस नाउन को वो रिप्लेस कर रहा है, और वो नाउन वाला सेंटेंस पहले आएगा और वो प्रोनाउन वाला सेंटेंस बाद में आएगा. ये जनरल सीक्वेंस होता है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन पहले यूज करते हैं हम और दूसरे सेंटेंस में हम प्रोनाउन यूज करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टिप इज यूज ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स. ट्रांजिशन क्या होता है वो समझ लो. सबसे पहले ट्रांजिशन होता है शिफ्ट फ्रॉम वन थॉट टू अनदर थॉट. जब भी कोई राइटर या फिर स्पीकर किसी टॉपिक पे डिस्कशन करता है या फिर राइट करता है, तब अलग अलग पॉइंट्स और अलग अलग थॉट्स उसके मन में आते हैं और वो एक्सप्लेन करने लगता है. व्हेन ही वांट्स टू शिफ्ट हिज थॉट, shift from make a shift from one thought to another thought, he uses a transition word. Transition words, most of the transition words are conjunctions, and you can see these conjunctions highlighted in these examples. In the part in sentence S6, you will find that and is highlighted. Again, in between there is but. Okay, that is also transition, a shift from one thought to another thought. And they like. Okay, and they live like this, not for fun. ये ऐसा जीते हैं क्योंकि फन के लिए या फिर मजे के लिए जीते नहीं है, बट because they are too poor. Means we are talking about some poor people in democratic countries. While also is a conjunction which indicates a shift or a transition from one thought to another thought, but also suggests a shift from a thought. But is used when when a statement is made and a diverting statement or a contradictory statement is made after the earlier statement, we that begins with but. Even also is a sentence, is a transition word that can help you answer the sentence. Now the last technique is elimination technique. You all know that in live sessions which are held on television channels, like a dance competition or singing competition, in all those competitions elimination techniques are held or they are employed. This technique is employed. एलिमिनेशन का मतलब होता है जो चीज जरूरी नहीं है या फिर जो चीज काम की नहीं है या फिर जो चीज हमें यहाँ यूज में नहीं आती,
उसे हमें एलिमिनेट कर देना है, वहां से हटा देना है। हाँ, यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे? तो हमें चार ऑप्शंस है आंसर में। चार ऑप्शंस में से हमें ढूंढना है कौन से ऑप्शन ऐसे है जो कौन सा मीन्स यू हैव टू लुक एट द फर्स्ट पार्ट। ऑप्शन ए, here let's take this example, ऑप्शन ए begins with q, ऑप्शन सी also begins with q। यहाँ पे दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो q से शुरू होते हैं, और आप अगर इस कंक्लूजन पे आते हैं कि सेंटेंस आपका जो सीक्वेंस है वो q से शुरू नहीं होगा, तो आप आसानी से इन दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। Okay, if logically, if you don't think that logically the q will not come in the beginning of the sequence, then you can eliminate those two options, and the competition or the challenge will be easier for you. Okay, and if you think that the sentence will not begin with s, you can eliminate q. Then you can eliminate option b. Then if you think that p will not be the first sentence, then you can eliminate option d. Then the remaining from the remaining options, you will have to choose the correct option and come to the answer. Now let's learn a few examples. Here I have given you the first example. Here in this session, we'll solve 5 examples, and then at the end of this live session, I will also add a link to a PDF file in which you will find more than 20 examples for practice. Okay. So let's practice these examples using the four techniques I have discussed with you. The first technique is articles, use of articles. You will have to find whether of an article is used in the beginning of a sentence or in the middle of a sentence. या फिर आपको ये भी ढूंढना है कि कोई ट्रांजिशन वर्ड या फिर कंजंक्शन यूज किया है या फिर कोई प्रोनाउन यूज किया है। तो अब आप अगर देखते हो यहाँ पे सेंटेंस आर बिगिंस विद बट, सेंटेंस आर जो शुरू हो रहा है वो बट से शुरू हो रहा है। लेकिन जब हम शुरू करेंगे ये टेक्निक्स एम्प्लॉय करना शुरू करेंगे, उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे सेंटेंसेस पढ़ के यू विल हैव टू रीड ऑल द सेंटेंसेस एंड फॉर्म अ जनरल आइडिया अबाउट द थीम ऑफ दिस पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की थीम के बारे में आपको एक जनरल आइडिया आपको देखना होगा कि क्या एग्जैक्टली थीम है इस पैराग्राफ की। तभी आप समझ पाओगे कि एग्जैक्टली क्या हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू फाइंड द लिंक बिटवीन सेंटेंसेस। जगदीश वॉज टायर्ड आफ्टर लॉन्ग वॉक थ्रू द थिक जंगल। जगदीश जो है थिक जंगल में, बहुत घनदाट जंगलामधून तो प्रवास करत असताना तो थकला होता, खूप थकला होता. And the last sentence of the paragraph is, here to his satisfaction, he found that there were hardly any mosquitoes. आणि पॅरेग्राफचा शेवट या वाक्याने होतो, इथं शेवटी त्याला अशी जागा मिळाली ज्यात ज्यात त्याचं समाधान झालं, की अशी जागा मिळाली की जिथं एकही मॉस्किटो नव्हता. ओके. तर जगदीश थकला होता याच्यापासून पॅरेग्राफची सुरुवात होते, आणि पॅरेग्राफचा शेवट होतो, जगदीशला अशी जागा मिळाली की जिथं एकही मॉस्किटो नव्हता आणि तो त्या जागेमध्ये समाधानी झाला. याच्यामध्ये चार घटना घडलेल्या आहेत की ज्या आपल्याला प्रॉपर सिक्वेन्सने अरेंज करायच्या. यू विल हॅव टू अरेंज ऑल दोज सेंटेन्स incidents in a proper sequence. Now, if you look at these sentences, as night fell, he came to a swampy place near a lake. Okay, जैसे ही अंधेरा हुआ, वो एक स्वैम्पी प्लेस नियर लेक, तालाब के बाजू में एक गीला स्वैम्पी प्लेस था जहाँ पे वो आया था. वेयर ही डिसाइडेड टू कैंप, जहाँ पे उसने डिसाइड किया था कि यहाँ पे हम रुकेंगे. बट द प्लेस वॉज, ही स्प्रेड अ ब्लैंकेट. वहां पे उसने डिसाइड करने के बाद में क्या किया? ही स्प्रेड अ ब्लैंकेट. लुक एट सेंटेंस एस, ही स्प्रेड अ ब्लैंकेट. उसने डिसाइड करने के बाद में वो ब्लैंकेट स्प्रेड किया on the ground and stretched himself out on it. Then but the place was so full of mosquitoes that he found it impossible to sleep. At last, in despair, he sprang into the branches of a nearby tree and climbed the top. Here, to his satisfaction, he found that there were hardly any mosquitoes. तो इस तरह से हमें सीक्वेंस मिल जाता है. तो ऑप्शन ए में वो सीक्वेंस मिलता, यू विल फाइंड दैट सीक्वेंस इन ऑप्शन ए, PSRQ. Okay, so this is the sequence. Then the next example is in this is the next example, and in which you will be talking about an adolescent boy. Okay,
a person who was adolescent in his college days, and now he was in search of a job. Okay, sentence S1 is the first sentence of the paragraph. S6 is the last sentence, as we already discussed. When he joined, he means we are talking about a particular a person. Okay, we have directly started with the pronoun, which means that about that person we have already discussed. Okay, that this paragraph, wherever we have taken this paragraph from, the earlier paragraph already discussed that person. Okay, when he joined the college, he was adolescent and immature. जब वो college join किया था उसने, तब वो adolescent और immature था. और पैराग्राफ का अंत होता है, एंड होता है S6 से, और S6 है बट हिज सगैसिटी हेल्प हिम गेट अ गुड जॉब. ओके, जब वो कॉलेज में था तब बहुत ही एडोलेसेंट था, लेकिन अंत में क्या होता है, उस हिज सगैसिटी हेल्प हिम फाइंड अ गुड जॉब. ओके, he learned a lot from his experiences at the college. He had to get suitably employed. 4 years of study in college changed him completely. When he left it, it means what? Here it is a pronoun. You will have to keep in mind that it is a pronoun, and this pronoun can help us find a link. I already discussed you pronoun will also help us, but is a conjunction. It is also known as a transition word. He is a pronoun. Okay, this will also help us. Okay, when is also transition words. All these transition words will transition words, pronouns, and uh, if there are articles also, if they will find they will help us find the link between sentences. Okay, then the sentence might probably start with when he left. See, he learned a lot from his experiences. You'll have to look at four options which are given here in answer. P, A, B, C, D. Option. There is one. Every option begins with a different part. Option A begins with P. Option B begins with S. Option C begins with R, and option D begins with Q. And here you cannot. Here you it becomes difficult or tough to use the elimination technique. When he joined the college, he was an adolescent and immature. When he left it, it means the college, which we already talked about. Okay, the noun college is already used in sentence S1. Okay, ये noun जब भी use किया जाता, noun के बारे में noun को जो pronoun replace कर रहा है, immediately उसके बाद में ये आना चाहिए pronoun. Okay, so the sentence, the answer can is there is chance of the answer beginning with S, and there is only one option which begins with S, option B. Let's try to fit these four options, four sentences in this option, and let's check whether this sequence is the correct one. SRQP. If we put these sentences in SRQP, you will see that this the paragraph will look like, when he left it, he was ready to face the problems of life. 4 years of study in the college changed him completely. Then he had to get suitably employed. He learned a lot from his experiences at the college, but his sagacity helped him get a good job. Okay, this can be the correct sequence. And if you think that there can be another sequence, just tell me in the link or in the comment box. Okay, now let's look at the next example. Undoubtedly science has done wonders. यहाँ पे हम साइंस के बारे में बात कर रहे हैं. साइंस ने बहुत सारी वंडर्स किए, जादू किए, या फिर आश्चर्य यहाँ पे किए हैं उन्होंने उसने. तो इस the wonders we are talking about, the wonders of science. Thus is a transition word which will help us find the link. We usually use thus in the end of the paragraph, but will also help us find a link. Here again, but is there, the honest answer. Okay. When do we answer something if there is a question? Here is a question. Look at the sentence R. Obviously R के बाद में Q आना चाहिए. अभी आपको देखना है कौन से चार ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें आर क्यू ये सीक्वेंस दिया है, मींस आर क्यू से पहले यूज किया है.
but it has stopped with wonders. Undoubtedly साइंस ने वंडर किए, बहुत सारे वंडर्स किए, लेकिन but it has stopped with wonders which are beneficial to mankind. Has it stopped? It is a question. क्या साइंस यहीं तक रुक गया, इंसान के लिए कुछ बेनिफिशियल वंडर्स करने तक ही रुक गया साइंस, या फिर उसके आगे भी गया? तो हमें इसका आंसर मिलता है क्वेश्चन सेंटेंस क्यू में. द ऑनेस्ट आंसर हैज टू बी नॉट ऑलवेज. सो आर क्यू कहाँ कहाँ मिलेगा हमें? ऑप्शन ए में आर क्यू है. ओके, ऑप्शन बी में आर क्यू नहीं, क्यू आर है, उल्टा है. देन आरपीक्यू है सी में. Let's try to fit these sentences in option in this sequence, in sequence A. Okay, QRS, QR, RQPS. Undoubtedly, science has done wonders, but has it stopped with wonders which are beneficial to mankind? The honest answer has to be not always. Then comes P. But in giving such an answer means what kind of answer are we talking about? Which already we have given in this sentence Q. So the correct option is A. Now next look at the next example. The next example is I will not be able to see you tomorrow. मैं आपको कल मिल नहीं पाऊंगा. Okay, या फिर मिल नहीं पाऊंगी. At any rate, I'll see you later in the week. किसी भी हाल में इस हफ्ते के अंत तक, एंड तक मैं आपको मिलूंगा. ओके, मीन्स सेंटेंस शुरू होता है आई विल नॉट बी एबल टू सी यू टुमारो, और सेंटेंस पैराग्राफ शुरू होता है और पैराग्राफ एंड होता है एट एनी रेट आई विल सी यू at the later in this week. Okay, and in between there are four sentences. You will have to rearrange them in a proper sequence. यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस दिया है आई विल नॉट बी एबल टू सी यू टुमारो. इसके बाद में आप हाउएवर के बारे में सोच सकते हो. इट इज अ ट्रांजिशन वर्ड. हाउएवर हम कब यूज करते हैं? जब हम कोई मीन्स we want to shift a thought from one place, from we want to make a shift from one thought to another thought, and especially a thought where something some optional thing is given. Okay, मैं आपको कल मिल नहीं पाऊंगा, फिर भी आपके पास एक ऑप्शन है. ओके, however if you like you can phone me. अगर आप चाहते हो तो आप मुझे फोन कर सकते हो. मैं आपको कल मिल नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहो तो आप मुझे फोन पे बात कर सकते हो. तो there is a chance that the answer can the sequence can begin with R, and there are how many options? There are two options which begin with R. Okay, so you can use elimination technique and eliminate option A and option C. Okay, by using this elimination technique your problem or your difficulty level will be reduced. Okay, however if you like you can phone me. देन आपको ढूंढना है कि आर के बाद में पी आएगा या फिर आर के बाद में क्यू आएगा, बिकॉज इन ऑप्शन बी आर के बाद में पी दिया है और इन ऑप्शन डी आर के बाद में क्यू दिया है. What is now look at the sentences P and Q. Sentence P says that there is only a simple laboratory test to be conducted. Actually, it is there is a word missing here, to be conducted. एक simple laboratory test conduct करना बाकी रह गया है. And sentence Q says once I know what the diagnosis is. डायग्नोसिस हमें कब पता चलता है? जस्ट जनरल आपको सोचना है लॉजिकली कि डायग्नोसिस हमें कब पता चलता है. लैबोरेटरी टेस्ट पहले होती है या डायग्नोसिस बाद में होता है? तो लैबोरेटरी टेस्ट वाला सेंटेंस जो है वो पहले आएगा, तो इसका मतलब है आर के बाद में पी आएगा, तो इसका मतलब है आपका आंसर है बी. सो बी इज द करेक्ट सीक्वेंस of these four sentences to fit in between S1 and S6 to form a correct paragraph or systematically organized paragraph or a systematically organized group of sentences. Always remember the point that sentences are not randomly arranged in a paragraph. They have logical sequence, and you will have to find that logical sequence using these four techniques which I discussed with you. The first technique I will tell you again. It is the use of articles. The second technique is use of pronouns. The third technique is elimination technique, and the fourth technique is transition words, which some of them are also known as conjunctions. Okay. Now the last example in today's session is this.
in which we are talking about clothing. Clothes should fit well. हमारे जो कपड़े हम पहनते हैं वो कैसे होने चाहिए? They should fit well. Okay, they should not be loose or they should not be tight more than tight more than enough. Okay, clothes should fit well, and the paragraph ends with they absorb sweat from the body and pick up dust from the surroundings. They means who or what? They is a pronoun. Okay, we are talking about clothes obviously, and this pronoun might obviously be talking about that noun, clothes. Okay, clothing that is too slack shapes the skin and is uncomfortable. जो क्लोथिंग है ज्यादा स्लैक होती है वो कैसे होती है? शेप्स द स्किन एंड अनकंफर्टेबल, ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है. यहाँ पे हमें ऑप्शन में भी देखना है. यहाँ पे देखो आप, अगर आप देखते हो तो दो ऑप्शन, ऑप्शन सी एंड डी एस शुरू हो रहे हैं, ऑप्शन ए एंड बी अलग अलग लेटर्स से शुरू हो रहे हैं. इसका मतलब ये है कि ऑप्शन, एक भी ऑप्शन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो आर से शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर आर से शुरू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चार ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आर से शुरू हो रहा है. तो यू विल हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस काइंड ऑफ टेक्निक आल्सो कैन बी यूज्ड टू मेक द थिंग्स इजी. तो आपको देखना है, एक तो ऑप्शन सी, पी, क्यू या फिर एस से शुरू होगा. क्लोथिंग दैट इज टू स्लैक शेप द स्किन एंड इज अनकंफर्टेबल. टाइट गारमेंट्स कैन कंस्ट्रिक्ट द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, स्पेशली दोज ऑफ द एब्डोमेन. एब्डोमेन्स जो टाइट गारमेंट्स होते हैं उनके बारे में क्यू क्यू में बात किया गया, और पी में बात किया है जो स्लैक या फिर लूज कपड़े होते हैं उनके बारे में बात किया गया. क्लोथ शुड बी केप्ट क्लीन. ओके, क्लोथ जो होते हैं वो क्लीन रखने चाहिए. उसका रीजन कहा क्या है? व्हाई इज दिस टॉक्ड अबाउट? उसका रीजन लास्ट सेंटेंस में दिया है. लुक एट द लास्ट सेंटेंस, S6. दे एब्जॉर्ब स्वेट, ओके, फ्रॉम द बॉडी एंड पिक अप डस्ट फ्रॉम द सराउंडिंग्स. कपड़े जो होते हैं हमारे, वो हमारे बॉडी का स्वेट एब्जॉर्ब करते हैं और सराउंडिंग्स का डस्ट भी पिकअप करते हैं. इसी इसी वजह से कपड़े ऑलरेडी क्लीन होने चाहिए. अगर ऑलरेडी गंदे है, ऑलरेडी स्वेट फिल्ड है और ऑलरेडी डस्टी है, तो देर इज नो स्कोप फॉर collecting more dust, or means they will be more dirty, and it will be more problematic. Okay, and it will be problematic for our health. So there is a link between R and S6. इसका मतलब है R सबसे लास्ट में आना चाहिए. आपको देखना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें R सबसे एंड में है. तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे R सबसे लास्ट में है, और वो ऑप्शन है ऑप्शन E, PQSR. Now let's check whether this option fits correctly, and try to fit all these four sentences in this sequence, and let's check whether the sequence is correct. PQSR, this is the sequence. Clothes should fit well. Clothing that is too slack shaves the skin and is uncomfortable. Tight garments can constrict the organs of the body, especially those of the abdomen. If they are too tight, they can constrict the blood vessels in the skin. Clothes should be kept clean. Yes, this seems to be the proper sequence, because क्यू में टाइट गारमेंट्स के बारे में बात किया है, और सेंटेंस एस में भी टाइट गारमेंट्स के बारे में बात किया गया है. और इन दोनों में जो सेकंड सेंटेंस है, सेंटेंस एस, इसमें ग्रेविटी ऑफ द इशू और ग्रेविटी ऑफ द पॉइंट हैज इंक्रीज्ड. ओके, सेंटेंस एस क्यू में दिया गया है कि टाइट गारमेंट्स क्या कंस्ट्रिक्ट करते हैं? वो दे कंस्ट्रिक्ट द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड स्पेशली दोज ऑफ द एब्डोमेन. ओके, एंड ग्रेविटी इस चीज का बढ़ के आपको दिखेगा सेंटेंस एस में. इफ दे आर टू टाइट, अगर वो ज्यादा टाइट है, जरूरत से टाइट है, तो क्या होगा? बॉडी के ऑर्गन्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा. अगर ज्यादा टाइट है तो क्या करेगा? इवन ब्लड वेसल्स को भी कंस्ट्रिक्ट कर सकता है. ओके, तो ग्रेविटी ऑफ द इशू, ग्रेविटी ऑफ द पॉइंट increases from sentence Q to sentence S. That's why sentence Q should logically come before sentence S. Okay, so option in this way we have come to the conclusion that the answer is A. Option A is the answer. Now at the end I would like to say that join Defense Career Academy Aurangabad. Like, share and subscribe this channel. Also visit the website which is named shatakshitutorials.com. I will also give you a link in the description of this video.
to a PDF file which you can easily open and download and do practice. And thank you. Have a nice day. That's all for today.